Okay, so we are moving for unit 2 now today. So unit 2 is also an important, and from this unit onwards we are actually working on the analytical kind of the examples, where today we are starting with the second unit. The second unit is something supervised learning. Okay, second unit is supervised learning. Okay, it is supervised learning. Okay, and it is unit number 2. So today might be I will share the C part for unit number 1, actually dependent on the things whatever is possible for me. But Google Classroom is already, have you got the Google Classroom code? Yesterday I have shared the VOLP code also, because the whole teaching material I have uploaded yesterday on the VOLP. Okay, have you gone through the VOLP? I have shared the material, even I have shared the books over there, from where you can access the unit 1 contents, and even the ebooks whatever mentioned in your syllabus. So even though if you have not started with accessing the VOLP platform, so at least for resource kind of thing, you may please access the contents from the VOLP. Okay, log in over there and you can access the contents. Okay, so that's the one thing. Now let us start with the very interesting unit number 2, which is the supervised learning. Okay, and under the supervised learning we are actually dealing with the regression part. Okay, let me see my syllabus. Okay, syllabus is in front of me. So in unit number 2, 3 parts are there. Actually not 3, 4 parts are there. So linear regression, then logistic regression, okay, then Bayes theorem, and then support vector machine. Okay, so today we will be looking for just the basics about the regression and supervised learning, and then in next lecture we will be actually starting with Bayes theorem first, because it's an interesting one, and you will find that Bayes theorem is, what I can say, easy to learn, so it will create an interest in you to go for the machine learning. Okay, and yesterday even I had a setup for the board and that, but there is a problem regarding the voice. Okay, so whatever is possible today also we will take it on the PPTs, but I'm trying to have it, because to solve the analytical kind of questions we required at least book and pen, or either the blackboard and the marker. Okay, so still 17 people. Okay, ठीक है, no issues. Chalo, we will start with the regression. So before start with the regression, we have already seen in the first two lectures what is the supervised learning, what is the unsupervised learning. Because when unit 1, unit 2 is supervised learning, then unit 3 is unsupervised, and then we are going for the deep learning part. Okay, so can anybody tell me what is the supervised learning? What is supervised learning? Ma'am, like in supervised learning, we know what will be the exact answer. Okay, I'm knowing what will be the input, what will be the output, what kind of what kind of linear models, sorry, not linear models, what kind of classifiers I am actually applying over there. So that is something I know. Okay, that is something I know in case of the supervised learning. Okay, anybody else wanted to say something about supervised learning? Anybody? Ma'am, just Anybody? like in Yes. a in MNC's, manager takes out the work from their team to achieve the goal. Okay. So what you wanted to tell me?
This is supervised learning. No, he Yes. knows Okay, what he okay. wants You to wanted achieve. to tell me about supervised learning. Yeah. Okay. Anybody else? Could you give me some examples of it? And spam mail. Pardon? Spam mail. Spam mail. Okay. Anybody? Please contribute from your side. Yes. Anybody else? Hmm? Yes, yes. Weather Go forecasting. ahead. Huh? Weather forecasting. Yes. Weather forecasting, gene analysis. Very true. और कोई एग्जाम्पल देगा? Okay. चलो ठीक है. Okay. So under the supervised learning, we will be actually working on the input, what kind of input I am giving. Then I am also working on the what kind of output is expected from it. Okay. So in between this input and output, I will be applying some algorithms in a such a way. Okay. Some algorithms in a such a way that I will be getting the exact method which is really giving me the 100% output. Okay. So here I will be learning, I will be trying to get the perfect answer under the supervised learning. Okay. So in this supervised learning, actually, there is one more term called as the binary classification. Okay, there is one more term that is called as the binary classification. Now, binary means what? Either you can class it as 1 or either you can class it as 0. Okay. So binary classification is something where you will fall at, that means this binary classification will fall under the category of supervised learning. That's the one more thing. And secondly, here the data, okay, data is labeled data. That is the very important difference between the supervised learning and unsupervised learning. We should not forget, we should not forget one thing, that under the supervised learning, the data is always labeled data. We know the features, we know the values, we always know the missing values. So because of that, as data is labeled, we can easily able to identify the missing values, we can work on it, we can pre-process on it, and that's the very important thing under the supervised learning. So you have given me some of the examples of the supervised learning. I will give you some of the example. One of the example you have given is the spam detection, spam mail detection. Yes, that is the correct answer. Second answer is the medical diagnosis. Under the medical diagnosis, we can always have the on that day, sorry, excuse me. So on that day we have discussed under medical diagnosis whether the person is suffering from the cancerous disease or not. So yes or no is the kind of answer for it. So that is also medical diagnosis. Then what I can what else, yes, credit card transaction, whether that is the fraudulent transaction or not, credit card transaction, whether that is the fraudulent or not. So that is also the one of the kind of the binary classification. Okay. Now I will open up one ppt so that I can give you some, because I required a board over here. Just 1 minute. Storyboarding. So, what kind of binary classification algorithms we can use over here? So, the binary classifications are decision tree algorithms. Even under the Veka GUI, we have seen that either if the marks are less than 40 or greater than 40, we can always categorize those marks with some frequency transaction, and we can always use the decision trees over there. So, these decision trees are the one kind of what I can say, one kind of algorithm from the binary
classification. Okay, from the binary classification. Just 1 minute. Okay, yes. Now that is enabled, I will share this PPT with you. Just 1 minute. I'm sharing it. Okay, window. Okay, is it visible? Blank screen, white. Okay, I hope this screen is visible to you. Yes, ma'am. Okay. Do you want me to use some another color instead of red? Let me take it purple. Okay. So yes. Okay. This is the test data set which I am providing. Okay. This is the test data set which I am providing. Here I am applying some of the binary classification algorithm. Okay. So instead of writing whole, I will just say binary classification. And with this binary classification algorithm, okay, here I will be applying some of the classifiers. Okay, what this classifier will do, it will help us to classify the given data set. Okay, given data set. So to this classifier, I am giving some test data. Okay, I'm giving some test data, and even I'm expecting that it should give me the class of that test data. Class means yes infected, no not infected, maybe that is the class. Okay, so what type of classifiers I may use? So one of the classifier which I can use is the decision tree. Okay, this is the one class type of classifier where I can apply the binary thing. Binary means, by means what? Two. Okay, by means two. That means to a particular data set. Okay, here if I can able to segregate this data set into 50-50%. Okay, so that is the called as, if I can able to do this 50-50 kind of classification over here, then I can say that classification accuracy over here is 100%. Am I correct? Okay, so here to do this classification, I can use decision tree as one of the algorithm. Okay, second algorithm which I can use is yes, neural network. Okay, neural network. Here in neural network, actually if actually we are going to see in detail what will be the neural network in next upcoming chapters, but still here I would like to know you that under the neural network there are certain hidden layers. Okay, one is input layer, one is output layer. So here let us say 1, 2 and 3. So this is the three input layers, 1, 2 and 3. These are the three input layers. So in between these three input layer, I may have either one hidden layer, or I may have either two hidden layer, and I may have this as my output. So I want, this is 3 by 2. Okay, that means this is hidden layer 1 and this is hidden layer 2. So here in neural network, each of these parameters are connected with each of the other input layers. Likewise, ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे जैसे सेकंड हो गया वैसे ही हम लोग थर्ड भी करेंगे. सो हियर इफ यू सी ईच एंड एवरी न्यूरॉन, ये जो सर्कल सर्कल दिख रहे हैं छोटे छोटे, this is called as the neurons. So each and every neuron is actually connected with each and every other neuron from the next layer. ठीक है, और ये जो रहता है अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, दिस इज द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, यानी ये आगे से इनपुट से आउटपुट जाता है. ठीक है, मैं एक बार इस नेटवर्क को कंप्लीट कर लूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, okay, yes, these are the two output layers. Okay, and this is the 1, 2 and 3 input layer,
and 2 output layers. Okay, and in between I am having 2 hidden layers. So instead of 2, I may have 2000 hidden layers. This is एक मिनट है, यहाँ पे ये बज गया है शायद. ओके, आई फॉरगॉट टू डू इट. ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. ठीक है, ईच एंड एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद द ईच एंड एवरी न्यूरॉन फ्रॉम अदर नेटवर्क. ओके, सो वेन एवर माई नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल इनपुट यहाँ से आया है और हर एक न्यूरॉन पे यहाँ पे एक वेट असाइन होता है. ठीक है, हर एक न्यूरॉन का एक वेट रहता है यहाँ पे. मैं अभी सब में वेट नहीं ऐड करूंगी, लेकिन हर एक न्यूरॉन के लिए अपना एक वेट रहता है. सो व्हेन योर नेटवर्क विल गो लाइक दिस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाता है, ओके, ये इनपुट से आउटपुट जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द फीड फॉरवर्ड. ठीक है, फीड फॉरवर्ड. लेकिन अगर फीड बैकवर्ड रहा या फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क रहा, सो फ्रॉम दिस टू इट कैन अगेन मूव टू द बैक टू द इनपुट. सो इट इज कॉल्ड एज द रिकरेंट और बैकवर्ड नेटवर्क्स. ओके, तो ये जब हम लोग ये करेंगे तो इसमें भी at 1 and 2 at output layers I may get the output as yes or no. That means here I can have the two types of the output over here, and that is called as the neural network. Even inside our human brain, okay, even our human brain works in the same strategy like the neural network. That is why it is called as the neural, because inside our brain each and every nerve is connected with the each and every other nerve from the other network. That is why to the brain our each and every part of the body, like अपने हाथ के nerves, पैर के nerves, okay, so whenever you feel some touch, that is the nerve activation. So when nerve will get activated, it will flow through a current. इसके वजह से हमारे बॉडी में भी करंट फ्लो करता है. ओके, and then whatever neural network works in the same way your human brain works. Okay, so that is the second kind of binary classification. Okay, third algorithm which I can use is the Bayes theorem और Bayes classification. ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद द रिग्रेशन टुडे, आई विल स्टार्ट विद द बेस थ्योरम और बेस क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और शायद नेक्स्ट लेक्चर तक वो हमारा बेस नेटवर्क हो जाएगा. ओके, एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज SVM. ठीक है, सो these all things, okay, these all SVM, Bayes theorem, neural network, decision tree, these all we are going to study in the unit number 2. okay, these all we are going to study in the unit number 2. ठीक है, अभी अगर मुझे बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है तो मैं कैसे करूंगी? ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपका एक फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मेडिकल का डेटा सेट लेते हैं. ठीक है, ये है मेरा डेटा सेट डी. तो अगर इस डेटा सेट को, ठीक है, अगर मैं हाई, ओके, देन हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, ठीक है, एंड लो रिस्क, ऐसे अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ. ठीक है, हाई रिस्क, दिस इज H, high risk, medium risk and low risk. ठीक है, and let us consider that if I draw a graph like this. ठीक है, if this is my graph, ठीक है, इस ग्राफ में now this is D and this is the risk. ठीक है, this is the risk. So if this H, अगर मुझे हाई रिस्क इंडिकेट करना है देन आई विल यूज प्लस. ठीक है, अगर मुझे मीडियम रिस्क इंडिकेट करना है तो आई विल यूज स्टार, और अगर मुझे लो रिस्क इंडिकेट करना है तो आई विल यूज माइनस साइन. ठीक है, तो चलो कुछ डेटा सेट बना लेते हैं यहाँ पे. ये मैंने प्लस का डेटा सेट बनाया है यहाँ पे. ठीक है, फिर मैंने कुछ माइनस का डेटा सेट बना लिया. ये ईच पॉइंट, ईच प्लस ईच माइनस इज रिप्रेजेंटिंग अ डेटा पॉइंट. ठीक है, प्लीज कंसिडर दिस एज स्टार,
क्योंकि अगर मैं ब्लैक बोर्ड यूज करती तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता ये। शिट। ओके, ठीक है। तो इफ दिस इज द वन पर्टिकुलर factor which will be representing the disease versus the risk. So if I can able to classify this like this, for example, ये मैंने यहाँ पे ऐसे क्लासिफाई किया, ठीक है। whatever I am drawing this is called as the decision boundary. Shit. Okay, this is called as the decision boundary, ठीक है। अभी ये this is the decision boundary which will be representing the high risk, this will be decision boundary which will be representing the medium risk, and this is representing the low risk over here, ठीक है। तो अगर ओके, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक बात बतानी है आपको। यहाँ पे अभी ये 3 क्लासेस है। दिस इज क्लास 1 विथ क्लास 1 रिप्रेजेंटिंग हाई रिस्क, class 2 representing medium risk, and class 3 representing the low risk. So if there are more than one class, okay, more than one class, at that time it is called as multi class classification. Okay, this is called as multi class classification. but अगर ये ऐसा ही है, ठीक है, और यहाँ पे समथिंग मैंने कुछ डेटा सेट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए मैंने, इसको मैंने परफेक्टली क्लासिफाई कर दिया है। देर आर नो आउटलायर्स इन बिटवीन, दिस इज द डिसीजन बाउंड्री, ओके, दिस इज द decision boundary, okay। at that time this is the class 1 which representing high risk, and this is the class 2 which representing the low risk, okay। this is D with the risk R. So there is only 2 classes over here, so it is called as the binary classification, ठीक है, it is called as binary classification। और अगर एक ही क्लास रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही क्लास है, यहाँ पे सब हाई रिस्क में है, सपोज ये आईसीयू वार्ड का डेटा सेट है जहाँ पे एवरी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो देर इज ओनली वन क्लास, सो इट इज कॉल्ड एज यूनरी क्लासिफिकेशन, ओके, इट इज कॉल्ड एज यूनरी क्लासिफिकेशन। जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, ईमेल स्पैम, ओके, स्पैम ईमेल। यूनरी का क्लासिफिकेशन अभी हमने आपको बताया, यूनरी में ओके, ऑल आर इन द पास क्लास, ठीक है, नोबडी हैज फेल्ड। और ये टर्नरी 3 टाइप्स के क्लासेस अगर है तो यहाँ पे मैं क्या एग्जांपल दूंगी, ये डिसीज का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। डिसीजन बाउंड्री विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द हाई रिस्क क्लास, लो रिस्क क्लास एंड मीडियम रिस्क क्लास, ओके। आर यू क्लियर विथ इट एवरीवन? बेसिक आपको समझ में आ गया बाइनरी क्लासिफिकेशन, ओके। एनी प्रॉब्लम इन बाइनरी क्लासिफिकेशन? ठीक है, इसके बाद में एक मिनट, जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है, चलो। नाउ आई विल टेल यू अबाउट, आज अगर बेस क्लास चालू करते हैं तो इट विल नॉट गेट फिनिश अप, तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले बेस क्लास चालू करेंगे, बेस थ्योरम, ठीक है। तो आज मैं आपको एक्सेसिंग क्लासिफिकेशन, अभी ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है उसके परफॉर्मेंस मेजर्स में आपको बताती हूँ, ठीक है, यानी हाउ टू फॉर्म द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो ये स्लाइड में क्लियर कर लेती हूँ। This is the point where we are explaining accessing classification performance, ठीक है। You may please note down this point, accessing, okay,
Do you have pen with you? Okay. Accessing classification परफॉर्मेंस. ठीक है. अभी इसमें हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स. कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वी आर हैविंग टोटल 4 पैरामीटर्स विथ अस. ओके, जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, दीज आर द बेसिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द मशीन लर्निंग. अगर आपने अभी तक पेन और नोटबुक नहीं लिया है तो यू मे प्लीज टेक द पेन एंड नोटबुक विथ यू, बिकॉज दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. ठीक है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर आपने अभी लिख के नहीं लिया तो. ठीक है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहाँ क्रिएट हुआ था? वेका में हम लोग जब फर्स्ट प्रैक्टिकल किए. ओके, इन वेका जब हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया तो वहां पे कुछ ऐसा मैट्रिक्स आया था, लेट अस से 32, 2, 14 एंड 18. और यहाँ पे आया करेक्टली क्लासिफाइड वर्सेस यहाँ पे आया इनकरेक्टली क्लासिफाइड, कुछ तो आया था. ठीक है, तो ये क्या मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. So in that particular matrix, okay, the very first parameter is called as the true positive. Okay, you may please note down the full form of it. True positive. Okay, now what is this true positive? Okay, आपका जो टेस्ट सेट है, okay, whatever test data set you are having, from that test data set, the true positive is something, the number of instances in the test set which are actually positive, okay, and treated as predicted as positive only. ठीक है, आर यू गेटिंग? कल हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल में हम लोगों ने एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू ये देखा था एंड में. कल हम लोगों ने गूगल कोलैब में कुछ प्रैक्टिकल किए, रिग्रेशन का ही प्रैक्टिकल किया कल हम लोगों ने. ठीक है, एंड अंडर द रिग्रेशन वी हैव सीन, वहां पे कुछ वैल्यू आई थी 117.20 और यहाँ पे आया था 117.18. ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 का कुछ डिफरेंस आया था. बट इन ट्रू पॉजिटिव, if the value is positive and actual value is positive and predicted value is also positive, it is called as the true positive value. ठीक है, it is called as true positive value. ठीक है, तो ये जो वैल्यू रहती है आपकी, this one, ठीक है, this value is called as true positive value. ये जो 18 है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैट्रिक्स भी दिखा देती हूँ. हेलो एवरीवन, आर यू विथ मी? Yes, ma'am. Okay, so this is true positive, this is true negative. Okay, then this is false positive and this is false negative. ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअल है, ये भी एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है. ठीक है, और ये प्रेडिक्टेड है. तो एक्चुअल इज नेगेटिव, predicted is negative, then it is true negative. Actual is positive versus predicted is also positive, then it is true positive. Actual is positive but predicted is negative is false negative, and actual is negative but predicted is positive, it is called as false positive. ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी सेकंड पढ़ना है ट्रू निगेटिव. तो ट्रू निगेटिव में द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन द टेस्ट सेट which are actually negative and also predicted as negative is called as the true negative. ठीक है, then third one is false positive. Okay, so under the false positive, the actual value is negative but treated as positive, the value which is falsely positive, so which is false,
which is actually negative value but treated as positive, is called as false positive, while as false negative is something value is actually positive but treated as negative. Okay, that means predicted as negative, so this is called as the false negative. Okay, any problem inside it? Any problem? ये समझ में आ गया? You may please note down the at least definition of true positive, true negative, false positive, and false negative. So true positive is something, the number of instances in the given test set which are actually in class positive but predicted as class negative is called as the true positive. Okay, true negative, the total number of instances in the given data set which are actually in the class negative and also predicted as class negative is called as the true negative. Okay, false positive, the total number of instances in the given test set, okay, which are in the class negative but predicted as class positive is called as the false positive. And same is with false negative, which are actually in the class positive but predicted as class negative, it's called as the false negative. Okay, so here, okay, here if I wanted to calculate the accuracy, okay, if I wanted to calculate the RACY, if I wanted to calculate the accuracy, then it is calculated as TP plus TN, true positive, okay, plus true negative, okay, divided by now here I would like to tell you one thing. This is the value capital N and this is the value capital P. ठीक है, तो ये N will be calculated, capital N will be calculated as true negative plus false positive. Okay, and this P is equal to calculated as false negative, okay, true positive. Okay, that means if I wanted to calculate the accuracy, then it is true negative plus false positive divided by Tn plus Fp plus Fn plus Tp. Okay, Tn plus Fp plus Fn plus Tp. समझ में आया everyone? Accuracy. Hello, all of you, are you with me? Yes, ma'am. Yes, मैं ma'am. पढ़ा रही जा रही हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेस. ओके, सो एक्यूरेसी समझ में आ गया सबको? व्हाट इज द एक्यूरेसी? अगर एक्यूरेसी समझ में आ गया तो अभी निकालेंगे एरर रेट. सो एरर रेट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्यूरेसी. ओके, 1 माइनस एक्यूरेसी. तो अभी ये समझ में आ गया? आपने ये सब नोट डाउन कर लिया है एवरीवन? डिड यू Yes, ma'am. नोटेड इट डाउन? Yes, ma'am. Okay, so I'm going to rub it now. ठीक है, I'm going to rub it and I'm going to give you some just 1 minute. ठीक है, चलो. Now
I will be giving you one question and you have to calculate the accuracy and error rate from it. Okay, मैं आपको सिर्फ values दूंगी. This is the confusion matrix. आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा आता है. ठीक है, 6. Okay, then your value is 26 and here it is 9. ठीक है, आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया होता है. ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन. कैलकुलेट द एक्यूरेसी एंड एरर रेट. नाउ I will be giving you 2 minutes. Just calculate the accuracy and error rate fast. Is everyone with me? Done? Everyone? Share your answer in the chat box. Sarthak, please write your error also. I want all 22 persons to reply for this. I want all of you should reply. Okay. These examples are there. अभी मैंने सिर्फ 2 ही पैरामीटर लिए हैं. ठीक है, one by one I'm going to take all the parameters. ठीक है, okay, let me check with all the answers and then I will be going to get you with the next next जो रहते हैं ना पैरामीटर्स, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस होते ही है. ठीक है, these are only 7-8 replies. What about others? Just don't sit idly, otherwise you will feel sleepy. 3 o'clock is the best time to sleep. What about others? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Still 3, 4 are pending. I think rest four are in sleep mode. Is it so? Is anybody sleeping out? चलो ठीक है,
चलो, now I'm going to share you one more thing here. Okay, I'm going to share one more thing over here, because with the same parameters we are going to calculate now the next, that is true positive rate, false positive rate, and all that. Okay, so we are going to go with it. Just wait a minute. अभी आपको ये समझ में आ गया है एक्यूरेसी का पेन. Okay, so next parameter after the accuracy and error rate is the true positive rate. ठीक है, true positive rate. What is the true positive rate? Is equal to, true positive rate is equal to true positive divided by true positive plus false negative. Okay, ट्रू पॉजिटिव रेट. ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव रेट इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ओके, सो उसी तरह what will be the false positive rate? Okay, there is a tact which we have to apply. False positive rate is equal to false positive divided by false positive plus true negative. Okay, and this true positive rate, okay, it is also called as sensitivity. आप ये प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि कुछ टाइम क्वेश्चन ऐसा रहता है, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी. आपको ये पता होना चाहिए, सेंसिटिविटी इज नथिंग बट द ट्रू पॉजिटिव रेट. ठीक है, सो ट्रू पॉजिटिव रेट इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी. ओके, एंड जैसे हमने ट्रू पॉजिटिव रेट निकाला है, फॉल्स पॉजिटिव रेट निकाला है, उसी तरह पे हम लोग यहाँ पे ये अदर भी थिंग्स निकाल सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज द ट्रू नेगेटिव रेट. जैसे ट्रू पॉजिटिव निकाला, ऐसे ट्रू नेगेटिव रेट. दिस ट्रू नेगेटिव रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द specificity. Okay, it is also called as the specificity. Okay, so what is this true negative rate? True negative rate is equal to true negative divided by true negative plus false positive. ठीक है, एक बार आपने ये ध्यान में रख लिया, उसके बाद में कोई भी पैरामीटर निकालना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. ठीक है, ये सेंसिटिविटी है. सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिकॉल. ठीक है, सेंसिटिविटी और रिकॉल एक ही चीज है, यानी सेंसिटिविटी, रिकॉल एंड ट्रू पॉजिटिव रेट आर वन एंड द सेम. ठीक है, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रेट निकाला है. ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला है फॉल्स पॉजिटिव रेट. तो चलो हम लोग ये बाद में करते हैं, कोई बात नहीं. ओके, आप अभी क्या करोगे, आप ये ट्रू पॉजिटिव रेट निकालोगे, फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालोगे और ट्रू नेगेटिव रेट निकालोगे. ये तीन वैल्यू अभी आप निकालोगे इसी के लिए 76, 26, 9 के लिए. ठीक है, और निकाल के आप मुझे फिर से बताना कि आपके वैल्यूज कितने हैं.
False positive rate is also 1 minus specificity. ठीक है. ओके, डन विथ इट. तीनों वैल्यूज निकाल लिए आपने. प्लीज पिंग योर वैल्यूज फॉर these three values: false positive rate, true positive rate, ओके, false negative rate. ये आप सब मुझे चैट बॉक्स में डालिए. यश, आपने अभी एरर रेट और एक्यूरेसी निकाला बेटा? चलो कोई बात नहीं, नो इश्यूज. आगे के वैल्यूज निकालिए. पहले आपको ट्रू पॉजिटिव रेट निकालना है. वो आपका 0.4 आया. ओके, एक बार चेक कर लो. हाँ, प्रणव, आप अपने वैल्यूज एक बार चेक कर लो. टीपीआर 0.257 इज करेक्ट. फिर नीचे 0.26 कैसे आया यश? ओके, 0.257 इज माई आंसर टू. तो यश, आप अपना वैल्यू चेक कीजिए एक बार. टीपीआर इज 0.6. नो मुग्धा, समथिंग इज रॉन्ग. ओके, प्लीज चेक. आपका एफपीआर करेक्ट आया है, बट टीपीआर का वैल्यू आई थिंक कुछ गलत आ रहा है. ठीक है, यू नो ऑल द वैल्यूज, नाउ यू हैव टू चेक. ओके ओके, सो गाइज, आप अपना अपनी तरफ से ये वैल्यूज निकाल के रखना. और मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ. ये एग्जांपल आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है. ठीक है, ये एग्जांपल आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब कुछ मल्टीपल टाइम्स पूछा जा सकता है. ठीक है, मैं यहाँ पे, यू जस्ट नोट डाउन दिस वैल्यूज. ओके, 1660, 3, 61 एंड 4. ओके, जो भी पैरामीटर आज हमने निकाले वो सब पैरामीटर आपको यहाँ पे इस वैल्यू के लिए निकालना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. चलो, आई हैव डन फ्रॉम माई साइड नाउ. ओके, आप ये सब नोट डाउन कर लो. आपके वैल्यूज सब आप चेक करो. ओके, FPR is 0.18. Okay, you need to check. Okay, you need to check. Vaibhav, chalo, I am done from my side. You may please mark your attendance. Okay, mark your attendance. Com people will write down your roll number, name, and the department. Okay. And do you have any problem in today's lecture? Okay, chalo. Then if you have mark your attendance, then you can leave the session. Thank you so much.
VOLP classroom code. Okay, I will share it here. Just wait. Just wait. Please note it down. VOLP classroom code. I will put it in the chat box. 329A 3Q. ठीक है? Onkar, this is the code. You need to join. Okay? The things has been shared. Unit number 1 contents has been shared over there. You can access it from there. Even you can share this code to others who wish to, or who you know that they are in AML and they have still not joined. Okay? Yes. Thank you. Okay, I'm leaving the session now. I hope everyone has marked their attendance. Thank you so much. Bye.